Good morning, dear parents and students. Your teacher, Happy Pandya, is again here to fill your mind with lots of information and knowledge. So, welcome back to your own fun-loving class. English is fun. Let's start our day with the second module of prepositions. And in today's module, we will continue with prepositions and attempt the last exercise. So, my dear students, without wasting any time, let's get started with prepositions. So students, in our previous video, we have known about 7 position words, and those were behind, on, under, in front of, between, near, and in. You can also say inside. Let's know about these position words through pictures. Hey, I'm Jack. I am a little boy. I can't stay at one place for a long time. And मैं many times positions भी change करता हूँ. So let me check कि आपके टीचर ने आप लोगों को position words कितने अच्छे से explain किया है. So, are you ready for the test? Students, सोच लो, ये आपका नहीं, आपकी मैम का टेस्ट है. तो क्या आप मुझे फेल होता देख सकते हो? नो मैम, अगर मैं फेल हो गई तो मैं रो रो के पूरी आंसुओं की नदी बहा दूंगी. नो मैम, हम ऐसा होने नहीं देंगे. हे जैक, we are ready. Ask whatever you want to. ओह, तो ये बात है. Okay, now tell me, where is the boy? इतना simple question. Let me tell you. The boy is on the bed. Good job. Now be ready for the next one. Now tell me, where is the boy? The boy is under the tree. Okay, now tell me, where is the boy? The boy is in front of the school. Very good. अब बताओ, where is the boy? Simple. The boy is near the cat. Okay, now tell me, where is the boy? इतना simple question. The boy is between the grandpa and grandma. Okay, now tell me, where is the boy? अरे, कुछ hard questions पूछो ना. ये तो बहुत easy है. The boy is behind the door. Okay, now your last question is, where is the boy? The boy is inside the car. ओह, तो अब समझ में आया कि आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया. मैम ने कूट कूट के कॉन्फिडेंस भर जो दिया है आपके अंदर. यस, वी आर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट. और ये छोटे मोटे टेस्ट तो हमारे लेफ्ट हैंड का गेम है. हमें इनसे डर नहीं लगता. Do you know, students, why have we answered the questions asked by Mr. Jack Haxon? Because today's exercise is also based on the position words. So let's move to practice time given on page number 40. Let's see and try to understand. Look at the picture and fill in the blanks. Now students, आपको क्या करना है? पिक्चर को ध्यान से देखना है and इन ब्लैंक्स को फिल करना है. अब आप कहोगे कि इन ब्लैंक्स को फिल कैसे करना है? तो क्लूज तो आपको बॉक्स में दिए ही हुए हैं. आपको उनकी हेल्प लेके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल नॉट हेल्प यू बिकॉज अब आपकी बहुत हेल्प हो चुकी है. अब कुछ अपने आप भी करो. लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स इसे अपने आप अटेम्प्ट करते हैं. That's it for today, kids. With this module, I conclude the chapter named Prepositions. Till then, keep loving, keep smiling, wear mask, follow hygiene, maintain social distancing.
watching. See you in next video. Bye bye.